वेल हेलो एंड नमस्कार सभी को। और यहाँ पे कई बार हमने देखा है कि कई बातें चलती हैं कि मुझे मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है, या बच्चों की तरफ से कंप्लेंट्स होती हैं कि मम्मी पापा को समझ ही नहीं आता कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट, एंड व्हाट आई वांटेड टू से वाज दिस, नॉट दिस. So there have been a lot of miscommunication issues and a lot of problems which nowadays this generation has been facing while communicating with each other as parents and as kids. So to improve the relationships between both the parties, I started doing secret research in different multiple schools. So I've covered more than 200 plus schools and I've studied more than 1000 students, and just, without letting them know what I am aiming at. And then when we spoke to the parents and tried to understand all of the things, we understood that it is all possible to work out. It's just that correct information is needed in order to understand. तो मैं यही पिछले कई सालों से पढ़ रही हूँ. बच्चों को किस तरह समझा जाए, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसे समझा जाए, बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो अपने पेरेंट्स की बातों को सुने, समझे, माने, और दोनों के बीच का रिलेशनशिप एकदम बढ़िया रहे. तो इन सारी चीजों का कलेक्टिव नॉलेज जितना मैंने इकट्ठा किया है पिछले 8 सालों में, मैं लेकर के आ रही हूँ टू शेयर विद ऑल ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ द चिल्ड्रन आउट देयर हु इंटेंड to have a good relationship with each other but are somehow not able to maintain. I want to be not a parenting coach. I don't want to be a child coach. Just want to be someone who can help you to improve relationships with your children and or with your parents. So it works hand in hand, and I am going to be spreading all the information which I have from the upcoming chapters which I'm going to be posting. And in some time we will be starting to have webinars onto it, to have one-to-one discussions with all the parents who have some different thoughts and some different doubts, and they need some specific assistance. So thank you so much. Please stay tuned and wait for us to start with the parenting journey. Namaskar.